सॉरी रॉन्ग वन। पाकिस्तान भाई, मेरे भाई और बहनों पाकिस्तान में, कमिजरेशंस, लेकिन खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भाई साहब ये क्या था यार भाई, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं सेटअप कर रहा था लास्ट आवर वॉच एंड ऑल दैट, पहले ही इतनी जल्दी थी, पता नहीं क्या ही तो इतनी जल्दी थी, पता नहीं ट्रेन छूट रही है। ऑलमोस्ट T20 मैच हो गया गाइस, इट इज अ T20 मैच, इट्स इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप ओडीआई इज हियर, और भाई स्पेशल पैनल फॉर अ स्पेशल डे। मतलब जो भी बोलो यार, मतलब हर एक विक्ट्री है वन साइड, पाकिस्तान के साथ विक्ट्री वन साइड। आई नो पाकिस्तानी सब्सक्राइबर्स है अपने, कमिग्रेशन सीरियसली मजाक मजाक में हम बोलते हैं, लेकिन द रियलिटी बीइंग दैट हमें बात करना है, काफी हमने बात करना है, लेकिन कमबैक किंग्स यार इंडिया में काफी सारे। बट टॉकिंग अबाउट कमबैक्स, वी हैव प्रसन्ना मेकिंग अ कमबैक ऑन द पैनल। प्रसन्ना, हाउ इज द जोश नाउ? Very high, very high. For a start, let us all do a simple counting exercise. 1, 2, everybody. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. 8, 0. And more to come. Trust me on that. I still feel Pakistan, you know, abhi it's not over because it's the first loss. So you never know. Just saying it there. Yeah. But yes, Ankit, kya haal hai bhai? Rene in the house, India champions in my opinion. We don't go so far, absolutely. We have seen this charter before, and so control. Absolutely. लेकिन हाँ, we are having यहाँ पर मनन in the house as well, another OG of the channel. मनन, first reactions first, मतलब कहीं ना कहीं रोहित शर्मा has to be given a lot of credit आज के विक्ट्री के लिए, simply put. Oh yes, and मुझे जो ज़्यादा पसंद आया was not Rohit Sharma the batsman, but Rohit Sharma the captain. Exactly. और you know what? मनन, I have to put my hands up. कहीं ना कहीं वॉच अलोंग के दौरान मैं बोल रहा था भाई, why is he not going with a plan B, because there's no plan B. But the fact is, प्लान अगर इतना अच्छा हो और अगर कैप्टन बैक कर रहा है तो कहीं ना कहीं बॉलर भी 100% देता है. That is what is clear, right? Absolutely. उसके bowling changes, master stroke, मतलब एक कुलदीप से एक ओवर डलवाना, फिर जड्डू को ले आना, change in the attack. Ball was spinning for Jaddu that we saw. Right. Absolute masterclass in captaincy from Rohit for sure. Batsman to hai, we all know, but yeah, I mean, today really he this was a wonderful captain performance from Rohit. Right, absolutely. यहाँ पर श्रेयांश in the house as well, and I know मेडिको भी आ गए अपने भाई, मेडविकेट एंड मेडिको बोथ आर हियर. तो गाइस, मतलब अपने मेडिको बंदो यार, रोहित शर्मा का 100 नहीं आना, इज इट अ डिसअपॉइंटमेंट रियली? मतलब कम ऑन, कैन नॉट बी डिसअपॉइंटमेंट. आई मीन 100 सबको देखनी तो थी ही, 100 की वजह से, मतलब पहले उसने श्रेयस अय्यर को रोका हुआ था कि भाई इतनी जल्दी गेम खत्म नहीं करना, पहले 100 बनने दे. उस चक्कर में श्रेयस अय्यर कह रहा है कि तूने तो 100 बनाई नहीं, मैं हाफ सेंचुरी बना लेता हूं. बट भाई चिराग इन द हाउस, व्हाट्स अप? आज तो किसी भी चीज से डिसअपॉइंटेड नहीं हो गया. आज तो जो हो गया बढ़िया था. मतलब निट पिकिंग की बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें यार, वी हैव टू डिस्कस न्यूट्रल इवन फॉर पाकिस्तान, देयर इज अ लॉट टू बी डिस्कस वहां पर. लेकिन भाई जो भी लोग जुड़े भाई, इतना फैंटास्टिक पैनल है. आई थिंक दे डिजर्व ऑल द लव, वी डिजर्व ऑल द लव, एंड यू गाइस डिजर्व ऑल द लव, बिकॉज आज तो भाई इंडिया जीती है पाकिस्तान के साथ. एंड आई नो अगेन पाकिस्तानी सब्सक्राइबर्स, कोई नहीं, इट्स द फर्स्ट लॉस. आई स्टिल बिलीव, आई एम स्टिल बैकिंग. यू नो व्हाट, एक और चलो आपके यू नो काइंड ऑफ encouragement I think is needed, because it's just first loss. So Pakistani subscribers अपने यार, तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है? मतलब it's a loss. So I know it's a drubbing, it's a humiliation. और कुछ synonyms याद आते हो तो भाई पैनल प्लीज go for it. लेकिन again I'm not trying to be sarcastic, it's fact है, वो होता है, that's sport, right? I don't know. अभी किसी की सीटी की आवाज आ रही थी, वो पाकिस्तान को हो रहा था. Sorry man, I lost it man. Absolutely great. लेकिन सब लोग लाइक बटन दबा दीजिए क्विकली, कम ऑन, लेट्स हिट डाउन द लाइक बटन. डेफिनेटली आज तो बनता है. एंड यहाँ पर क्विकली शाउट आउट एट भाई तो ऑल द चैनल्स जो है अपने पैनल यहाँ पर, मनन CFC ऑन ट्विटर, मिड विकेट और फुटबॉल मेडिको ऑन यूट्यूब, एज वेल एज पीपी टॉक्स ऑन यूट्यूब. चलो भाई सब लोग देख सकते हैं फर्स्ट लाइन डिस्क्रिप्शन. कुणाल बोल रहे पाकिस्तान हाइप वाज ऑल फाट, नो क्या कुणाल ब्रो. ये चिराग आई थिंक आई विल स्टार्ट विद यू ऑन दिस कमेंट. मतलब मैं खुद बहुत हाइप किया हूं, मैं अपना हाथ वहां भी ऊपर ऊंचा करना चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान इज लुकिंग गुड यार. कम ऑन भाई, 30 ओवर्स तक वॉच अलोंग किए थे. मैं सोचा यार चलो भाई यहाँ तो प्रॉपर स्कोर बन रहा है, सेकंड इनिंग्स में आएंगे वॉच अलोंग में, लंबा इनिंग्स होगा. उसी टाइम पे गो रॉन्ग, जब तक आप वॉच अलोंग था तब तक ये थे, उसके बाद कुछ नहीं था.
मतलब लेकिन उसके बाद एप्लीकेशन एरर और क्या? application error at its peak, batsmen nobody was ready to raise their hand except Babar and Rizwan. मतलब it was just a snap of a finger and Pakistan was all out after 152. उससे कुछ बचा ही नहीं था गेम में उनके लिए तो. But the way I have to credit the Indian bowlers as well, and especially one guy that जिसने मुझे ये गेम जिताया है is Rohit Sharma. The way he captained, the way he rotated his bowlers, the way he brought in the players we needed. कल आप देखोगे बाबर और रिजवान were having a great partnership. But he got in Siraj and Bumrah at that instance. उसको पता था वो विकेट कितनी जरूरी है, and the bowlers delivered at the same time. साथ ही साथ उसको पता था जब अब वो बहुत ज्यादा नीचे पाकिस्तान लग गई है, रिजवान जब भी टिका हुआ था, he still brought on बुमराह कि अभी ही खत्म करूंगा. He could have आज शार्दुल की तू अपने ओवर्स निकाल ले कि हम कम रन से मतलब रन बचा लेंगे. But he did not go for that. He went for the kill. उसने कहा बुमराह लाओ, खत्म करते हैं 40 ओवर में गेम. इनको बैटिंग करने नहीं देनी उससे ज्यादा. Messi's गोड यहाँ पे बोल रहे हैं their middle and lower order crumble like a house of cards. Pathetic. If this is how they play international cricket, then better sell popcorn out there. Messi's को थोड़ा सा again भावनाओं में बह रहे हैं अपन. यार it's a game of cricket. मतलब again 8-0 है definitely, and 8-0 ही नहीं, it's about लिटरली भाई कितने साल हो गए यार वर्ल्ड कप शुरू हुए. मतलब इट्स बिन डेकेड्स एंड डेकेड्स यार. मतलब दैट इज रियली, मतलब मैं समझ सकता हूँ जो हो रहा है, आप जो बोल रहे हो, लेकिन साथ साथ में ये भी है मतलब देयर आर मोमेंट्स. और हम अगेन गोज बैक टू माय माइंड गोज बैक टू 2019. मतलब वी वर लुकिंग फ्लॉलेस इन 2019. आई एम नॉट इवन जोकिंग. यहाँ पर रोहित शर्मा हिमसेल्फ, मतलब कहीं ना कहीं वो डेजा वू फीलिंग भी आ रही मुझे, सच में बोलूं तो. नहीं भैया, being honest, 2019 में ना I did see that top middle order not being tested enough. मिडिल ऑर्डर की बारी ही नहीं है. हाँ, वो एक थी. Because the लेकिन way अभी भी विराट लास्ट and- दो मैच में तो यही हुआ है. नहीं, ऑस्ट्रेलिया वाला जो गेम था वो एक मैच में था, ठीक है, प्रॉपर मुझे टेस्ट हुआ है, लेकिन नहीं, आज भी केएल राहुल ने अय्यर को आके खेलना पड़ा ना. अय्यर का 50 इज इक्वली क्रूशियल आज की गेम में. हाँ मतलब हाँ ठीक है, मतलब अगर आप भी अगर पाकिस्तान की तरह क्रम्बल कर सकते थे द वे पाकिस्तानी टीम डिड, तो आई विल से वी आर टेस्टेड इनफ इस टाइम पे. द ओनली थिंग यू कैन से इज क्या आप शार्दुल ठाकुर को बैटिंग करते हुए मुझे देखना है. आई डोंट वांट टू, आई डोंट थिंक इट विल हैपन. दैट इज द ओनली थिंग लेफ्ट अगर मुझे निटपिक करना हो तो. Prasanna, how much do you believe in this comment? Wasn't draw till 155 for 2, and then it all just came down. Yeah, exactly. और वो भी मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट इज आई थिंक इवन एट द पॉइंट दैट वी टुक द विकेट्स ना, मतलब फॉर इंस्टेंस शुरू करते चलो बाय द फर्स्ट 8 ओवर्स. मैं इफ एनीवन वाज वाचिंग माय वॉच अलोंग, पता है कि यार मैं एडमिट करता हूँ कि भाई मैं बोल रहा था यार हमारे पास प्लान भी है ही नहीं, तो इसलिए वी आर फोर्स्ड टू प्लान है. लेकिन प्लान ए में इतना आप बैक कर रहे हो. अब जनरली क्या होता है व्हेन यू गो विद अ नॉर्मल सिनेरियो, यू गिव 4 ओवर्स टू बोथ योर ओपनिंग बॉलर्स, ठीक है, वो तो है ही. 7.5 ओवर्स एंड 8th ओवर के लास्ट बॉल में विकेट गिरा. तो अगेन बॉल कुड हैव, यू कैन आर्ग्यू कि केप्ट अ लिटिल लो, यू नो, अब्दुल्ला शफीक का. बट मनन, मतलब इफ यू वर देयर, मतलब उस समय आप क्या सोच रहे थे? अगेन सच बोलना, आप क्या सोच रहे थे? मतलब वर यू टेम्प्टेड टू सी जडेजा गेट एन अर्ली बॉल, और मे बी इवन से फॉर एग्जांपल अपना लॉर्ड शार्दुल हु गॉट बाय द वे 2 ओवर्स, एंड वी विल डिस्कस अबाउट दैट. लेकिन क्या बोलता आप? मैं तो सिराज पे मेरे बाल मच रहा था, इतनी बाउंड्रियां दी हैं फर्स्ट फ्यू ओवर्स में. बट 5 बॉल में 3 बाउंड्री थी फर्स्ट 5 बॉल्स में, बाय द वे. But he's a champion. I mean, his mentality has gone 3 levels above since he started playing for India. Crucial breakthroughs. Again, दोनों बहुत important wickets उसने दी सिराज ने. मतलब Abdullah and Imam got off to a great start, and then he broke that partnership, and then he broke the partnership between Babar and Rizwan. So I think he's a champion bowler. He maybe concede runs, but he'll also take up wickets and crucial wickets. तो स्टार्टिंग में तो हाँ, आई वाज प्रीटी सिमिलर टू व्हाट यू सेड. मैं भी थोड़े बाल नोच रहा था, मतलब 320-330 टारगेट आएगा, एंड लेट्स होप वी विल बी एबल टू चेस, क्योंकि स्टार्टिंग में तो विकेट वाज लुकिंग प्रीटी गुड टू बैट ऑन. ज़्यादा स्विंग भी नहीं था, ज़्यादा मतलब बाउंस कैरी भी अच्छा था, तो आई फेल्ट दैट यू नो इट इज अ गुड विकेट टू बैट. बट आई थिंक लैटर पार्ट ऑफ द इनिंग्स रियली शोड इट्स ट्रू नेचर कि थोड़ा स्लो एंड लो है. But nobody would have seen this collapse anyway. So yeah, I think happy that. एक सेकंड, पुतन सुनिधि चौहान भी थी क्या? Yeah. Yes. अच्छा, I didn't watch that actually. Where did you all In the watch opening. it?
No, Oh, no, it she was was in not the opening. telecasted. There was no telecast only. It was only for the अरे people यार in the stands. हाँ Thank ठीक है God. मतलब अरे they did अरे their job. All love to Queens. या मतलब बट पता है ये एक्चुअली इसी रीजन से हुआ है बिकॉज आईसीसी हैज आस्क्ड देम कि ना करे बिकॉज फिर वो जो ओपनिंग सेरेमनी वाला पॉइंट था ना कि ओपनिंग सेरेमनी बाद में क्यों हो रही है आईसीसी रियलाइज देयर मिस्टेक तो वो टेलीकास्ट एज ओपनिंग सेरेमनी टेलीकास्ट तो नहीं हुआ ऑफिशियल टाइप्स नहीं दिस किए वाज हाँ दिस More वाज of a जस्ट अ stadium celebration. हाँ हाँ स्टेडियम लोकल सेलिब्रेशन कह लो या फिर कह लो कि प्री मैच टू इंडिया पाकिस्तान ब्रो स्टेडियम में कुछ भी कर सकता है ना तो स्टेडियम की तरफ से दिखवा दिया एब्सोल्युटली अगेन भाई गाइस बिग अप टू एवरीवन यहाँ पर लेकिन ऋतुराज यार मच लव ब्रो मच लव एब्सोल्युटली जय हो 100% ब्लू फॉर नाउ हैविंग सेड दैट मतलब that point जब you know that सिराज has taken the wicket again the best part was यहाँ पर मैं श्रेयांश के पास आता हूँ श्रेयांश सिराज को कंटिन्यू करना एंड बुमराह को निकालना फ्रॉम द अटैक राइट अगेन दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक यार मतलब Exactly. अगेन आप बोल सकते हो दैट एट दैट पॉइंट यू वुड बी टेम्प्टेड टू गिव बुमराह एन एक्स्ट्रा ओवर डिस्पाइट सिराज टेकिंग अ विकेट और आप बोल रहे हो दैट नहीं मतलब दिस इज समथिंग जो हम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हार्दिक इज बॉलिंग सो वेल और हम ज्यादा कंफर्टेबल है इन मिडिल ओवर्स मतलब I was like not expecting that at all from Rohit. See, मेरे लिए तो ये था कि Siraj got his wicket on the best ball he bowled and is still till that moment. And you see, the moment he got his wicket, his passion, everything went good for him after that, the one wicket he got. Before that, he was looking shaky. His deliveries were not nice. His length was. The moment he got the wicket, the next very over he bowled was, I think, just single run and baki 5 dot balls thing. It was that brilliant. So that is backing to again रोहित शर्मा उसको पता है कि उसको कौन से बॉलर को कैसे टाइप का समझाना है कैसे टाइप का यूज करना है ही हैड द कॉन्फिडेंस इन बुमराह कि बुमराह मिडिल ओवर में आके ही तुम्हें विकेट दिला देगा कोई दिक्कत नहीं बुमराह की तो यू नीडेड अ कॉन्फिडेंट सिराज एंड सिराज की विकेट मिलते ही उसका अगला ओवर जब और भी अच्छा गया यू कैन सी द एग्रेशन इन सिराज की बॉलिंग ओवरऑल थ्रू आउट द मैच उसके बाद से तो ओवरऑल अगेन अ बिग अप्स टू रोहित शर्मा की कैप्टेंसी मतलब कैन नॉट बी अप्रिशिएटेड इनफ बीइंग वेरी ऑनेस्ट द वे ही इज मैनेजिंग रोटेटिंग एंड timing of the bowlers is absolutely beautiful. Yes, बिल्कुल भाई लेकिन अगेन मतलब अगर वी गो बैक टू द स्कोर लाइन यहाँ पर मतलब मुझे क्लियरली लग रहा है दैट स्कोर कार्ड में देखो तो दैट वन थिंग दैट स्टैंड्स आउट फॉर मी इज दैट मतलब अगेन हमारे मिडिल ऑर्डर का पार्टनरशिप एंड बाबर एंड रिजवान बाय द वे बाबर फाइनली गेटिंग 50 अगेंस्ट इंडिया ऑल्दो भाई रिजवान बिकेम आउट 49 लेकिन वो एलबीडब्ल्यू डिसीजन यार मतलब साउथ शकील का मतलब टू द नेकेड आई सीम क्लियर मुझे लग रहा है पिचिंग आउटसाइड लेग यार क्या ही तो ले रहे हो किसका था वो कौन कौन बोला था ऑन द पिच टू टेक द रिव्यू साउथ शकील नहीं himself इट was वाज very confident about the fact of out. हाँ अच्छा भाई मतलब what a review absolutely man this was one of those rare I know India great reviews in my opinion लेकिन हाँ हार्दिक यहाँ I पर think the opposite भैया I think the opposite I think it अच्छा was a plum to me on naked eye that is was it to on the umpire to me umpiring today was below average being honest Absolutely the shit. decisions he was pressure giving हाँ they face the pressure India Pakistan crowd and या all that प्रेशर था तो आप इंडिया की साइड में डिसीजन दो ना इंडिया के अगेंस्ट डिसीजन भी दे रहे नहीं the thing is जो पक्का आउट था उस पे वो ऐसे था कि नहीं यार छोड़ना क्या फालतू में अपील कर रहा है एंड आई वाज लाइक डोंट ये आउट देना अगर देखो लग रहा है कि नॉट आउट पक्का रिव्यू ले लेगा वो बंदा जो नॉट आउट लग रहा था उसमें उसने आउट दे दिया कि हाँ चलो भाई तू रिव्यू ले ले मतलब सच्चा क्वेश्चनेबल अंपायर टुडे मैं स्ट्रीम पे भी उस वक्त यही गुस्सा कर रहा था मैं चिराग को कॉल करके गुस्सा कर रहा हूँ कि भाई इस अंपायर को क्यों बुलाते हैं इंडिया पाकिस्तान मैच में मतलब माय फादर एट द सेम रूम वाज सेइंग कि यही अंपायर है ही इज रिमेंबर द फेस नाउ कि ये अंपायर सबसे कुत्ता अंपायर है इट्स द सेम अंपायर हाँ नहीं the thing was basically as in when a ball kind of goes in the trajectory leg side में फिर comes off side में ना for a left handed batsman कभी कभी वो एक notion देता है that it might have pitched outside the leg stump मतलब again मतलब we all get that लेकिन again वो हाँ generally मैं agree करता हूँ that umpire wasn't so good but again अगर हम बात करते हैं about a particular instance और again I know positives ही बात करेंगे batting के बारे में आएंगे for sure लेकिन एक पॉइंट भाई आई थिंक मनन के साथ हमने कल ही डिस्कस किया था डिटेल में बट आई कम टू मनन प्रसन्ना आई हैव नॉट गॉट योर ओपिनियन यहाँ पर बिकॉज आई डोंट थिंक वी वर पार्ट ऑफ द प्रीवियस शोज दिस टाइम प्रसन्ना व्हाट डू यू थिंक अबाउट शार्दुल ठाकुर bowling 2 overs in this match मतलब again I want to be as positive as possible guys I have to put that disclaimer प्रसन्ना please go ahead just trying out something and I mean just trying out a sixth option because at that time because Pakistan were going well and we were not taking wickets so I thought he was okay let's give him and see if the sixth wicket option comes. But once Bowman and Siraj were back and the wickets came,
and then he was able to turn to Kuldeep, and then Pandya also took the wickets. Then there was no need for Thakore. I think it was just a tryout, but ultimately it ended up well for us. So not complaining in that sense. मतलब is it saying that जिस दिन सिराज पिटेगा उस दिन भाई ठाकुर अपने लास्ट ओवर्स डेथ बॉलिंग करेगा? Is that what we understand? Is that No. India's plan? नहीं? No, भैया. I'll simply say कि if you are talking about कि शार्दुल कैसे खेलता है, when Shardul is in the team now, then he's your sixth bowler. Pandya is not your sixth bowler. So he's our eighth batsman and sixth bowler. He's our Yeah. Yes. I think यहाँ Yes, पर he is. Shreyansh is a KKR fan, right? बिल्कुल जैसे KKR यूज किया करती थी सूर्य कुमार यादव को, वैसे यूज कर रहे हैं हम लोग शार्दुल ठाकुर को बेसिकली. वो क्या रहा है यहाँ पर अपना See, KKR fan? I think Shardul Thakur, being very superstitious, I think Shardul Thakur is also sort of a lucky charm for Indian team at this point. अरे बाप रे. I think it's the same fact कि if something is not broken, then don't fix it. वाली चीज चल रही है. जिस दिन शार्दुल ठाकुर की बैटिंग आई और उस दिन कुछ हुआ अगर तो शायद गालियां पड़े, बट अभी के लिए शार्दुल ठाकुर इन द टीम इज नॉट मेकिंग एनीवन्स आई इच. उसके होते हुए टीम खेल तो सही रही है. देखो, अगर तुम ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान दोनों को 200 के स्कोर के अराउंड सीमित कर रहे हो तो सही है. जब शार्दुल ठाकुर के बिना था ऑस्ट्रेलिया वाला, बट फिर भी सही चल रहा है अभी. जो मत करो फालतू में कुछ और. देखो मतलब मनन, अंकित भैया. हाँ प्लीज. यस चिराग, यस प्लीज. हाँ, मतलब टॉकिंग अबाउट जो आप डेथ ओवर्स की बात कर रहे थे ना, अबाउट सिराज डालेगा या कौन डालेगा, इफ इन केस आज के मैच में इतनी विकेट नहीं गिरती तो यू वुड हैव सीन शार्दुल बोल मोर एंड इन द मिडिल ओनली, एंड जसप्रीत बुमराह एंड साथ ही हार्दिक पांड्या के ओवर्स रोक लिए जाते. हार्दिक पांड्या एंड बुमराह आज योर डेथ बॉलर्स. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सिराज भी डालेगा. सिराज आपको 49th एंड 50th ओवर डाल देता, कोई भी 2 ओवर्स रुकता है, बट आपके लिए डेथ ओवर्स आर फॉर हार्दिक पांड्या एंड जसप्रीत बुमराह मोर देन सिराज ऑलरेडी. So you can't see Shardul Thakur as a death और bowler. मैं तो एक्चुअली ये भी देखता हूँ क्योंकि आपने देखा ये ट्रेंड आई थिंक लास्ट कपल ऑफ मैचेस इन द एशिया कप एज वेल एज अभी, दैट कुलदीप भाई एक्चुअली bowls between 48th and 45th ओवर, तो दैट पार्ट इज टेकन केयर ऑफ टू सम एक्सटेंट. लेकिन हाँ, अगेन मैं तो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ. मैं बोल रहा हूँ यार, आपका प्राइम बॉलर भी पिट सकता है, जो ऑलमोस्ट आज हो ही गया था ऑलमोस्ट. At that point, you need an Ashwin or Shami. उसमें I know Manan has a point, इसलिए मैं Manan का वेट कर रहा हूँ. But प्रियांश का मैं यहाँ पर देख रहा हूँ comment. Today Shardul bowled only 2 overs, and if you are going to use him for 2-4 overs per match, then don't you think it's better to play Shami? प्रियांश, breaking news ये है कि भाई इंडिया खेल रही है T20 क्रिकेट, बिकॉज हमें खत्म करना है मैच 20 ओवर्स के अंदर. तो यहाँ पर कोटा होता है 4 ही ओवर भाई हर एक बॉलर का, इज व्हाट रोहित शर्मा इज सेइंग. लेकिन जोक्स असाइड मनन, आई एम वेटिंग फॉर यू. वी डिस्कस्ड वेरी डिटेल में ये वाला पॉइंट कल. अभी भी are you of the same opinion what we discussed yesterday in the preview, or do you think यार नहीं, जो प्रसन्ना ने बोला, श्रेयांश ने बोला, चिराग ने बोला, I think towards श्रेयांश ने बोला about lucky charm, that was an interesting one, और winning combination क्यों change कर रहे हो, क्या बोल रहे हो आप? I think I'm 100% agreeing with Chirag. If Babar and Rizwan had continued to bat, maybe अगर Babar out होके South Shakil की partnership बनती, you would have definitely would have seen Shardul bowl more. But within the space of 10-12 गेंदों में, I think they lost 3 wickets, and then Rohit smelled blood. अगर आपको kill के लिए जाने, if you're going for the kill, then you need Siraj and Bumrah rather than Shardul. So that's when he took that opportunity, and then he bowled more of Bumrah. Otherwise, अगर एक पार्टनरशिप फिर छोटी 20-30 रन की बन जाती between say South Shakil and Rizwan, or तो rather वो attacking captaincy था rather than seeing it as the Exactly. only option as a force. Exactly. So it's not कि Shardul ने कुछ गलत किया या he bowled badly. It's just he wanted to go for that kill. He smelled blood and he went for it. And that's what we really impressed. क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि चलो restrict run flow restrict करते हैं, let's keep them down to 250 or something, but no, he smelled blood, he went for the wickets. And Shardul, as good a partnership breaker he is, he's not someone who will constantly, he's not a wicket taking bowler, I would say. Don't get me wrong, when I'm trying to say मतलब वो potency है, he's not that attacking kind of bowler नहीं है वो. He'll give you wickets out of nowhere, but Bumrah and Siraj के against में there's no comparison. So I think you'll see more of Shardul in the next games when there is a partnership, when the opposition team actually plays ODI cricket and 50 overs. So आप देखोगे कि Shardul will bowl more. So that's not a problem for me. But I would definitely stick to my point from the preview, right? Maybe Shardul के बदले Ashwin, I would probably bring him back.
in this. I would have played him in this game वो as well. बोल दो मनन बोल दो you know what, to be honest, यहाँ पर कुणाल ने दे दिया है. मतलब अगेन मतलब आप ऐसा पिच में खिलाओ शार्दुल को, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन, आई नो वी आर ऑल पॉजिटिव गाइस, डेफिनेटली इंडिया जीती है 8 बार एंड ऑल दैट, आई एम अगेन रिमाइंडिंग माई सेल्फ अगेन अगेन, लेकिन द रियलिटी इज दैट यस इट्स अभी क्या मतलब क्या बोलते हैं, इट्स अ बैटल, द वॉर इज येट टू बी वन, यू नो वो वाला चीज है. दैट्स द वे वी नीड टू लुक एट इट. एंड अगेन मतलब कभी कभी क्या होता है ना, व्हेन वी विन ना, you know, you taper over the cracks. That is what I think, in my personal opinion, it could have backfired big time today. Well, Siraj came back in the last ball of his potential spell, जो I'm pretty sure अगर वो बॉल में विकेट नहीं देता तो उसको नहीं मिलता एक ओवर. We also know that let's not kid ourselves, ठीक है. तो वो एक चीज है 100%. और उस समय अगर आपको you're anyway hesitant, like you are in the 8th over of the innings where Pakistan, मतलब being Pakistan the old in World Cups against India, they are not losing a wicket, और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि विकेट आएगा, मतलब that was the painful part up until 7.5 overs. तो उस समय आई थॉट दैट यू नो मतलब अगर हमारे पास होता ऑन द पिच से अश्विन, बिकॉज ही बॉल्स विद द न्यू बॉल, पीपल फॉरगेट, एंड विद कंट्रोल, क्योंकि फिंगर स्पिनर है एंड ही हैज डन दैट इन द पास्ट अगेंस्ट पाकिस्तान एज वेल. और इवन शमी हु इज टेक्निकली एन ओपनिंग बॉलर, वो अलग बात है कि हम उसको देते नहीं उतना उसका वादा, जस्ट बिकॉज ही इज मोहम्मद शमी नहीं हम्बल, दैट्स व्हाट आई फील इट. लेकिन हाँ कुणाल, आई वुड डेफिनेटली अग्री, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे लक का फैक्टर है, जैसे कंटिन्यूटी का फैक्टर है, दैट पार्ट आई गेट इट. Shardul is below the pecking order, message good bol rahe, and I would want to have Ashwin or Shami in place of him. I would go with Ashwin, as we need to have an extra spinner to slow the game as we have attacking bowlers. Exactly. Prasanna, this was a pitch jahan par again it was not helping the seamers, neither the spinners as much. Although aap bol sakte ho ball kept a little touch low, you can argue that going by the wicket jo gire hai, thoda bahut Pakistan batsmen have helped. Isn't that the classical case of using the experience of Ashwin? Yeah, there was a bit of turn though. We saw with Jadeja. First ball itself, like it kind of ripped the surface. So yeah, yes, Ashwin could have been used, but would you give Ashwin only 2 overs though? But that's what I'm saying. Ashwin would have definitely bowled. मतलब how many of you in the panel think that अगर Ashwin रहता तो उसको भी 2 ओवर मिलते? Is there anyone in the panel who thinks that? नहीं. He would at least need to bowl 4-5 overs. Correct. मतलब again, it's great. Yeah, but I have the power of hindsight. So I can say that if in case Ashwin होता, so हम problem of 2 महीने के चक्कर में क्या पता इतना टैगिंग हो ही नहीं पाते. That's sometimes वही है कि डिफेंसिव बोल सकते हैं. चैनल मेट का ही बोलूं कि अगर अश्विन होता तो क्या पता 150 पे ऑल आउट हो जाते. हाँ मतलब वही है ना, you can't predict what has not happened. Exactly. Yeah. पता नहीं मतलब again let's go come back to the positive and we'll discuss this. And well भाई सब लोग यहाँ पर मुझे सुनने में आया लाइक्स काफी कम हुए for whatever reason. भाई आज भी लाइक्स में कंजूसी, come on bro. अगर आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो तो भाई पता है आप इंडिया का सपोर्ट नहीं कर रहे हो. अगर इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो तो कर लीजिए, और साथ साथ में जो भी लोग देख रहे हैं साथ में hit that subscribe and bell icon on in your every panel's channel as well. First line description आपको पता ही है क्या है drill. लेकिन हाँ definitely a lot of shorts as well we are coming, as well as football medico में आप हमेशा football medico बोलता हूँ, mid wicket as well as PB Talks में आप check out कर सकते हैं. By the way, I think PB Talks is also live in half an hour. That'll be fun because yes, we have to come back on the football conversation. यहाँ पर मैं सिर्फ realize किया we are having Shreyansh as the odd one out because he's not a Chelsea fan. लेकिन we are all Indian fans, so it doesn't matter. Big up to Shreyansh. लेकिन कोई नहीं, अरे that's the spirit bro, that's the spirit. बिल्कुल भाई. लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग पर आते हैं, मतलब if you have to pinpoint about their batting, whose wicket you think मतलब clearly it was a chuck किया विकेट को, मतलब किससे शुरू करें? प्रसन्ना, you want to tell which is the Pakistan batsman you thought that chucked his wicket away? I think it was Iftikhar because you lost the wicket earlier. You hit a 4 and you tried to sweep, and you could say it's unlucky because it was not unlucky. Yes, to an extent unlucky, but he didn't need to go for his shot. Like it's what I meant, because I thought Rizwan, to an extent, the ball was a definitely good ball by Bumrah, but sometimes the way he bats now, sometimes the ball's outside off stump, he has that tendency to lose his balance. Yeah, and he keeps a space. There's a space that he keeps between bat and pad, which is very clear. There's always that space, and I think Iftikhar's one is the one that he threw it away, and after that, it was only a matter of time. Hassan Ali, I mean, what was he even doing? Previous ball, he lost the wicket. Next ball, Kuldeep Yadav comes, he tries to.
बट बुमराह यार भाई मजा आ गया यार आज तो Yeah, मतलब definitely. बहुत ज्यादा मजा आ गया. The Now fact you is see the difference between Bumrah and the others. 100 that quality, no cream rises to the top वाला चीज again touch Yeah. wood भाई. Yeah, yeah. Everyone भाई सब लोग ढूंढ लो touch wood, cross your fingers and all that. यहाँ पर मैं जनरली बोलता हूँ I am not superstitious all that, लेकिन भाई इंडियन टीम के साथ होते हैं भाई. Let's be real. Having said that, यार बुमराह का मैं एक और चीज नोटिस किया था that he was actually consistently touching 140 and then sudden से he was dropping to 120. ऐसा नहीं बीच का नहीं. तो I don't know. चिराग क्या लगता है? The fact is again बुमराह bowling so well tells you that is a clear reason why Shami is not being considered, right? Because आपको पता है कि यार reliability Yeah, factor तो yeah. हाई होता है, right? Yeah. And see, when Bumrah is fit, he is the best in the world. Not just Indian team, not just any other team. He is the best in the world. 100%. He 100%. he picks himself. And Rare आपने जब कह रहे हो 140 और 120 का जो डिफरेंस है ना, the best about Bumrah is कि वो he knows when to use his variations. बुमराह को जब एक स्टेप आउट करके चौका पड़ा, उसको समझ आ गया था दिस पिच इज नॉट फॉर द पेसर्स. तुम इस पे कितनी ही पिच कर लो बॉल, कितनी अच्छी लेंथ पे डाल लो, तुम पिटोगे. देन ही केम टू ए स्लोअर वन एंड द बॉल दैट ही बोल्ड टू रिजवान हैड नो क्लू. आप उसको ऑफ स्पिन ही बोलो, वो ऑफ स्पिन बॉल थी, मजाक से. It was a fast off spin उसने ball लेकिन that way बोला he है was अपने studying. इंटरव्यू में that there was a touch of reverse. तो he was not trying to do an off cutter or a leg cutter in either of the wickets. लेकिन मतलब पता नहीं, again obviously बुमराह knows better than us क्योंकि he was bowling with the ball, but I agree with चिराग. कहीं ना कहीं I think जो change of pace है and that is something which probably works well जब बुमराह bowl करते हैं at 140 and that is clear, and of course it doesn't help If you don't pick that slow run from the hand, you're not going to pick it at all. Yeah, This is and where the I believe. बुमराह का एक्शन है ना, वहां पे मुश्किल होता है टू पिक इट फ्रॉम द हैंड Yeah, बिकॉज that's it. इट इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी ऑड एंगल. Good point for sure. कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. Absolutely. मतलब लेकिन coming back to Pakistan, मतलब pretty sure that अभी हम बोल रहे थे, कल ही बात कर रहे थे हम कि यार उनकी मिडिल ऑर्डर ironically for a change is actually looking good. I know एक ही मैच है, मतलब they've lost one match in 3 and let's be real, the first 2 matches आप expect कर रहे थे anyway to win with all due respect to श्रीलंका जो एशिया कप में दिखाई थी, but let's be real, it was a great chase as well पाकिस्तान का. Now अभी ऑस्ट्रेलिया है, कहीं ना कहीं I think it's a do or die match for both the way I see it, although it's still early in the tournament, especially Australia का तो definitely do or die है, no two ways about Manan. तो if you are Pakistan right now, मतलब I know आज Imam Ullah look good, I don't think there's a change needed, but if you are seeing that lower middle order importantly, क्योंकि शादाब भाई bowling में भी एकदम बेकार bowling यार, बेकार मतलब बेकार, मतलब I'm a शादाब fan and Chirag knows it exactly, हमने इतना बात किया है, क्या गंदी बॉलिंग कर रहा है यार, मतलब आई वुड हैव मूव्ड, आई एम नॉट इवन जोकिंग, यहाँ पर फुल टॉस इज देयर. तो शादाब एंड इवन नवाज यार, मतलब जैसे हम शार्दुल की बात करते हैं, कहीं ना कहीं नवाज और शादाब से आप बिट्स एंड पीसेस खिला रहे हो, तो शुड दे जस्ट गो विद एन एक्स्ट्रा प्रॉपर बॉलर? I think so. Shadab की bowling has been very bad, but particularly India के सामने तो बहुत ही गंदी bowling कर रहा है. Right from last year's T20 World Cup. तो I think उसका थोड़ा शार्दुल जैसा रोल है. मुझे ऐसा लगता है कि he is handy with the bat. तो कभी अगर नहीं चले तो शादाब ने 1-2 छक्के मार दिए, थोड़े रन बन गए ऐसा टाइप. But I would definitely drop one of them, one of Shadab or Nawaz, and bring Usama Mir. आज मैंने ऐसा सुना, I think Ramiz Raja mentioned during the comment that Usama Mir is, I think, down with fever or something. That's why he did not play. But if he's fit, I would definitely bring him in instead of one of these two, because neither of them are wicket-taking options. Maybe थोड़ा containment का option है, and both are handy with the bat. तो ऐसे What about Wasim Junior? I think उनके pace is not the problem. I know आप थोड़े पेट गए हैं वो लोग. Pace उतना ज़्यादा problem नहीं लगता है मुझे. शाहीन तो anyway undroppable है. Haris Rafi, I don't think he's it was not an off the day best basically, but still he's an asset, I think. So Hassan Ali is the only one, but उन्होंने भी last game में he also took like 4 wickets, so he can't be dropped. But pace I think उतना ज़्यादा problem नहीं है जितना उनका 4th और 5th bowling option. I think वो बहुत पिटते हैं. So I think a specialist spinner maybe is the way to go. And I think do or die पाकिस्तान के लिए उतना नहीं है, because this is their first defeat. So and this is the first big team technically that you played among the right. Manan bhai, but I'll say the opposite. Pakistan will enter with the same confidence, because जो आपने 2 teams हराई है ना,
it has been on the same pitch and that to two qualifier teams. तो आप कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं ही जाओगे कि हमारे पास 2 विन अंडर द बेल्ट हैं. ये Rather, कॉन्फिडेंस शैटरिंग होगा फॉर श्योर, क्योंकि जिस तरीके से कोलैप्स हुआ, दैट शोज देयर मेंटल फ्रेजिलिटी. एंड रमीज राजा ने भी यही बोला आज. Exactly, and starting with as a Rohit Sharma took full advantage of that, and I think this will be very damaging from a confidence point of view. So they do need to beat a good team, but I don't think with this bowling lineup, these bowling options, they can do that. Sri Lanka के सामने भी against a weak Sri Lanka they conceded 340, but thankfully because of their Sri batting, Lanka's bowling was so bad. I mean, you can't concede 25 wickets. Except for I think on a spinner here. Tikshana. Yeah. I don't think they have a quality option. Even Pathirana is very raw. बहुत expectation डाल देते हैं उसके. भाई पाथिराना मैं देख रहा था एक stat in this calendar year or something is given 90 runs of wides. And that's where again the genius that is MS Dhoni comes into the picture. He specifically told them not to play him too much. So, I was coming this to Prasanna and me only. We have praised this guy in IPL so much. We both being Chennai fans, we think he was one of the best bowlers in IPL. But as Dhoni mentioned himself that he is not an ODI bowler. Dhoni mentioned that he's not a test bowler. Even on ODI, they should use him as less as possible. Yeah, that is what exactly Dhoni mentioned. Breakthrough guy, surprise weapon type of thing. Yeah. So that's the thing. Ankit bhai, एक बार just put Messi's goat का comment, his last comment. Tell us something new. To be fair, the new one they were doing well. Fielding well. What was well? To be fair, they are doing well this year. They were unlucky today, I'll say. Not they were unlucky today. I mean, तुम boundary को ball पे मार रहे हो. Yeah, but it gives us good nostalgia, na. Fair point. In fact, they have been well. But how was Shreyansh? How was India's fielding? How would you rate India's fielding, Aj? I would rate India's fielding quite well. I mean, there was no problem. I don't think there's anything to complain in India's fielding. One thing I see lack of discussion is Abdullah Shafiq ki wicket. Because I'll tell you why I think it's one of the most important part of today's match. The opening partnership was looking crispy, especially Abdullah Shafiq, because he was treating Bumrah as a bowler, not as Bumrah. Yeah. He was at least आगे आके बुमराह को मार रहा था भाई. How many players have you seen doing that? And उसकी विकेट उसने अपनी विकेट दी भी सिराज को, the person who needed it more. And वहां से एक बटरफ्लाई इफेक्ट स्टार्ट हुआ था कि अच्छा मतलब इंडिया is coming back into the match. I felt bad for Kuldeep though. Everywhere he was going, ball was following him. Actually, मैं वही बोलने वाला था क्योंकि I saw at least 2-3 occasions when Kuldeep bhai just dived and he just missed the ball कहीं ना कहीं, और that happens. And even we were praising India की fielding very well, but one thing I have heard Virat Kohli mentioned once, उसका कोई interview था, he mentioned कि there's only a very small gap difference between well tried and stopping that. Yeah. आज श्रेयस अय्यर के 2-3 एफर्ट थे, इवन कुलदीप का 1-2 एफर्ट थे, that was a very well tried effort. बट अगर वो 1 सेकंड बेटर होता, व्हाट विराट कोहली सेड कि मैं अपने आप को उस 1 सेकंड के लिए ट्रेन करता हूँ कि मैं एक इजी कैच पकड़ लूंगा रादर देन अ फैंसी लुकिंग कैच, बिकॉज़ वो मुझसे दूर रह गई थी. I don't effective. You have got to be effective at the end of the day, right? And that 1 second of timing takes lot of training. It's not definite. It's not a one time thing. You have to keep practicing that. मेरा क्वेश्चन ना मतलब I know it was out of context, but that was the reason for my question, because I have the same opinion कि कहीं ना कहीं I think there is still scope. I know लोगों को लग रहा होगा I am being a slightly negative thing, लेकिन again हमें देखना है it's a battle one, it's not a war one, so we have to कहीं ना कहीं as much as we should celebrate for sure, लेकिन I think there are a lot of things that maybe we can fix. They can talk about that. अब इंडिया का नेक्स्ट है, I think there's a sufficient gap now. I'm seeing Bangladesh Thursday, October 19, Bangladesh Pune, Bangladesh Thursday. So with that, I'll go across the panel quickly. What do you think should be the starting 11, or rather, would you make any changes, Chirag? I'll make a change. चलो चिराग से शुरू करते हैं. चिराग बोलो. Yeah, I'll make a change. I'll rest Bumrah or Siraj, either one of the two. I want them to play the whole 9. I can't see them playing the whole 9 games. All said and done, injuries को आपको manage करना पड़ेगा. And when you have a Mohammad Shami sitting on the bench, you don't need to worry that much. You are not dropping the quality from a very good bowler to a average bowler. You are getting equal experience. You are getting a good bowler. So I might consider resting one of the two. And for the rest, I'll go. Maybe I'll bring in an Ashwin just because for the Pune wicket, I would love to see an Ashwin rather than a Shardul.
और एक और चीज यहाँ पर while we go to the rest of the panel, one more thing to note was obviously we're not discussed till now 35 minutes into the stream. I think last 3 दिनों से हम वो डिस्कस कर रहे थे शुभमन गिल, हाउ डिड ही कम अप? आई थिंक ही लुक्ड फाइन, ऑल्दो मैंने एकदम He was डिटेल में good. तो नहीं Very देखा good. होगा, Very good. बट आई थिंक ही He वाज was फाइन, looking राइट? सो आई डोंट absolutely He थिंक was just treat to the unlucky. eyes. A treat to the eyes. When he was Yeah. batting. To be really honest. yeah, and the fact is he was able to be in the field, and that's I think far more important in my opinion, because it's not easy being there. I think Manan is then Ahmedabad. So Manan, what about you? आप change करोगे next match के लिए, considering that we have got 3-3, और नहीं बांग्लादेश भाई 2007 वाइब्स आते हैं हमेशा. I'm actually a little torn because I don't want to change what is working, and there is a gap. जैसा मैंने बोला कि there is 5 days of gap, so enough time है recuperate करने का. So might as well get the qualification in the bag. Last game Netherlands है, you are anyway going to change a lot there. I'm sure Surya Kumar and everyone will be. इसलिए मैं टिकट नहीं ले रहा, नेदरलैंड्स वाला ओनली स्कोप है मेरे लिए टिकट लेने का थोड़ा सा. So you will always have. That is the reason scope है. भाई लेकिन उसके लिए भी बहुत पे करना पड़ता है यार. प्लीज मनन कंटिन्यू. But no, I actually agree with Chirag कि Shami should play क्योंकि भगवान अगर किसी को इंजरी हो गई तो Shami shouldn't be risky. So I would also probably bring Shami in at least for and I would probably drop Siraj क्योंकि 2 मैचेस में थोड़ा lukewarm bowling performance रहा है, not because of performance issues but just generally एक थोड़ा mental break मिल जाए उसको, come back, train and then come back to the team. So I would bring Shami in. Ashwin, I'm not sure क्योंकि I'm not exactly sure how Pune wicket will behave. Maybe तो अगर शार्दुल का चल रहा है तो maybe give him some more time with the ball, give him 7-8 overs, see how he does, and continue with that. So more or less the same deal, except for one this seamer change. That's about it. Okay, ठीक. Shreyansh, And over to you. and before Chirag, moving on to the panel, just point कि we are thinking इसमें तो 5 दिन का gap है before the Bangladesh game, but do not forget we have to play Sunday को New New Zealand को. Zealand. Yeah. That is the more important game. So आप keeping यहाँ that gap in- ले लो but वहाँ नहीं. हाँ. keeping that in mind, I see, मेरे को पता नहीं, मैं थोड़ा हूँ, मतलब हार्दिक पांड्या के हाथ में ना पट्टी देख के थोड़ी सी फटती है. तो I'll set out a हार्दिक पांड्या, bring in a Sky because obviously भाई Sky को भी भैया एक सेकंड. Shreyansh, you're a Benzema fan, I'm assuming. Yes. I had the wallpaper. Yeah, please continue. So हार्दिक को बिठा के let him थोड़ा सा वो, I'll bring in a Sky. The next change I'll do is बुमराह को बिठा के I'll bring in a Shami. My reason of playing Siraj is because सिराज को जो आज कॉन्फिडेंस मिला है, I would like him to continue that in the Bangladesh game. बुमराह तो कर ही रहा है अच्छा, तो बुमराह को थोड़ा रेस्ट देके I'll bring in a Shami. I want to see more of Shardul bowling, so why not rest Hardik? Let Shardul take the mantle of the bowling instead of Hardik Pandya. Let Hardik sit down, have Sky कि मारो भाई मारो अच्छे. I think Sky will be hungry to score against Bangladesh as well. तू फिर शार्दुल को मिला के 5 बॉलर खिलाएगा. हाँ, मतलब that is the ultimate test, no? That Shardul. I'll go with it. Let's see if we need him to bowl 10 overs. हमें think Shardul test Hardik- करना है ना. We need to test Shardul, yeah. I think I can't Hardik do brings a lot of balance to the team. उसको drop But करने Hardik के को बाद rest, ये मेरे होता हिसाब से है. Hardik को rest is very Important. much needed. तो I I want to say see. हार्दिक आफ्टर न्यूजीलैंड भाई, not before न्यूजीलैंड. भाई but उसका हाथ, will you risk a Hardik injury in a Bangladesh game or will you say कि भाई क्या Hardik? डोंट थिंक ऐसी इंजरी है, नहीं तो आज भी नहीं खेलता यार. पता नहीं. I would rather have a Hardik Pandya sitting out and let Sky come in and bowl. Bat. भाई because देखो हमें 9 मैचेस खेलने हैं, ठीक है, 9 मैचेस खेलने हैं, and we all know to qualify we need to win 6 is what I understand. The consensus says that, but idea is like I said, battle one, war needs to be won, or war needing to be won is very important. We go top of the table. और मुझे लगता है गोइंग बाय कितने मैचेस चल रहे इधर उधर, मैं थिंक 7-8 मैचेस कम से कम जीतने पड़ेंगे. आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, With a good 9 run rate. matches. Yeah, with a good run rate as well. 7 with a good run rate, or 8. I think 8 matches won. I'm not seeing any other team winning like all matches. Even मुझे 7 नहीं लग रहा. even 7 7 is we done. comfortably end in top 1 or 2. हाँ 7 लेकिन वही है ना, 2 भी हो जाए तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि 3 will be like a closer match comparatively. आप the idea is I think You the have 4th to team, play I know. all the teams at any point, so it doesn't matter. Yeah. This does not have IPL system. When you top from Yeah. finish नहीं, top इसलिए मैं इतना सोच रहा हूँ क्योंकि आईपीएल में एटलीस्ट यू गेट 2 शॉट्स ना, यहाँ पर एक ही है. तो फॉर अपने मी को top आज four के में दिन आना में है भी बस.
as much as South Africa have been great, and I know New Zealand भी बहुत अच्छा लगी है, but I think in a knockout match, getting in England and Australia, I think is a little bit more nervous for me personally, Yeah. despite the form. मैं बोल रहा हूँ, इन ऑस्ट्रेलिया अभी बहुत कम चांसेस लग रहे हैं, बहुत ही मतलब बदतर टीम लग रही है अभी, ऐसे बोल सकते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन नॉकआउट मैच में वो हमेशा से होता है मेरा, आई डोंट नो व्हाई. बट Prasanna, what about you, as in your choices? Shreyansh, by the way, interesting I answer. was thinking not to rest anyone because continue this flow, but I think maybe we could give Bumrah a rest because Bumrah doesn't matter whether he plays 1 or 2 matches in a row. Even if he comes back after 1 year, he's still Bumrah. He is not. He's never going to change. So, but Siraj, I think, is that confidence kind of player. So I think he needs to continue, and Sami can come in, and then maybe as Shreyansh mentioned, maybe we can sit out Pandya and maybe give Ashwin a go. So maybe Ashwin can take that fifth bowler, and then Shardul can still be that sixth bowler. So even with 1 or 2 changes, I still expect us to win comfortably. So that should not be a problem. Yeah, but what about Shakib is out Bangladesh? for Bangladesh. Shakib is out for Bangladesh? Yeah. Wow. He's their best bowler. Sorry? Shakib is doubtful to play. Oh, damn. He's their key player. Yeah. And Shanaka is out of the World Cup, right? Yeah, Shanaka is out. Just wow. And who will be the captain now? Mendes? Not sure. Kushal Mendes. Confirm. That's bad, yeah. That's bad. मतलब कहीं ना कहीं मतलब I was expecting more from Sri Lanka in the after Asia Cup. This is better for Sri Lanka. This is a blessing in disguise. If Shanaka is out, trust me on that. Think so? This captaincy, this is a blessing in disguise. And the player Kushal Mendes is, if he can reflect that attacking nature in his captaincy, you might see an upset from Sri Lanka. चलो यहाँ पर बोल दिए चिराग. तो बाय द वे वी विल टेक अ फ्यू मोर कमेंट्स एंड अ फ्यू मोर क्वेश्चंस और टॉपिक्स टू बी डिस्कस. लेकिन भाई श्रेयांश को जाना है आई बिलीव. तो बिग अप श्रेयांश ओपी हो जाए इन द चैट. अगेन डू चेक आउट Medwicket guys. Is he the better half of Medwicket or one half of Medwicket? That is for you to be discussed. But the point being that he's not even the half. अभी के लिए भाई again jokes aside भाई, I know I told you odd one out Real Madrid and all that, but at the end of the day it's all India and we're all one year. No matter, doesn't matter as much as it's a fan channel for all to see. तो Shreyansh, before you leave, your last words क्या बोल रहे हो? रोहित शर्मा has been proving very very good. चिराग को तो कुछ बोलने का फायदा ही नहीं है. और I like the team better by the way. अश्विन को लाती तुमने मेरा वो कर दिया कि अश्विन बेस्ट. ठीक है, अश्विन को ले आओ. I take my team back. अश्विन वाला दी है. बाकी yeah, top 4 before leaving. Top 4 before leaving. India. I'll say England. I'm still backing up England because Chirag here doesn't think England will make it. अच्छा, that's the reason. Cool. New Zealand and South Africa. Interesting. चलो भाई. No Australia. Top 4. No Australia. Bye. Okay, bye. भाई दीपक को कोई टाइम आउट दो ब्रो. कोई मॉड यार प्लीज. बिग अप टू उत्कर्ष एंड अदर्स मॉड्स. दीपक भाई साहब थोड़ा समझ ले यार. जग जा. अपन भी यार बहुत हमने बैंटर किया है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गेटिंग रिलीजियस और नॉट. लेट्स नॉट गो देयर. अच्छे मूड में आए भाई, खराब मत करिए. दीपक को कोई टाइम आउट दो प्लीज. समवन इन द चैट. यहाँ पर मॉड्स ओपी यार. लेकिन हाँ, बिग अप टू श्रेयांश. इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग लाइनअप्स सजेशन है श्रेयांश से. लेकिन टॉप फॉर प्रेडिक्शंस, लेट्स गो ऑन द टेबल अगेन. एवरीवन द चैट भी. लेकिन चिराग क्या लगता है अभी यार? टेबल ऑफिस दिखाता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब आर यू डिसअपॉइंटेड दैट वी हैव नॉट गॉट अ क्लोज मैच इन द टूर्नामेंट? आपको लग रहा है कि यार न्यूजीलैंड विल बी अपसेट, इंग्लैंड विल बी अपसेट एक और बार? मतलब आर यू एक्सपेक्टिंग सम ऑफ द फिक्सचर्स जो होने वाले? Tomorrow could be an upset. Wow. Tomorrow could be a big upset. Not really. England, Afghanistan. I don't think so. I have this feeling. मतलब, if tomorrow is not an upset, even if tomorrow is not an upset, England is missing out on top 4. Australia will nick it at the last moment. It's going to be India, South Africa, England, and South Africa, New Zealand, and Australia. And I'll not even rule out Pakistan if they have a good run against the good teams. But नहीं बिल्कुल. पाकिस्तान आई थिंक आज बैटिंग में दे लॉस्ट देयर वे. It's all of a sudden. I think it's just a bogey team thing, na. Like you sometimes you freeze against one of your teams, but correct. Or वो 125k people in the house if they say that. No? First time you were bound to crumble under. Yeah. चलो भाई. But Manan, I know you have to go as well. Manan,
going by these जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है Mistake could be an upset. South Africa on revenge for what happened in Australia last year. Yeah, exactly. Netherlands, why not? Why not bring it on? मैं तो बोलता हूँ South Africa still I would say they are the chokers as much as they are doing well. Manan, what is your opinion about surprise and top 4? Top 4 तो मैंने I think preview में ही बता दूँ तो India, So nothing changes basically for you. India, New Zealand, England I think for sure. Fourth is up for grabs मेरे हिसाब से या तो पाकिस्तान या तो South Africa. Again, I don't think South Africa will choke against Netherlands for what it's worth, but I think they will choke against some of the good sides. They are yet to play New Zealand, Pakistan, India, even England. So they will lose 2 or 3 matches out of these 4-5. तो मेरे हिसाब से that is fourth spot is up for grabs. I think New Zealand are very consistent, तो वो तो रहेंगे. I think our form has been good. We've already played 2 very good sides. Is Kane Williamson fine? कल retired or what I heard? No. Thumb fracture. He'll miss at least 2-3 games. I don't think he'll play against us. See, that's why हम रचिन रविंद्रा को हमने big up तो कर लिया, लेकिन I think he's still far too young to expect that role. So will you get William back? I'm probably guessing, नहीं? Yeah. Will. भाई लेकिन एक सेकंड मैं थोड़ा ढूंढ रहा हूँ, सॉरी मनन, लेकिन मैं यहाँ पर आई एम नॉट एबल टू फाइंड अ सर्टेन टीम, तो आई थिंक अच्छा अभी मिल गया, सॉरी सो जा कैसा हालत हो गया है साला, भिखारियों के साथ सोना पड़ रहा है भाई प्रेडिक्शंस में भी क्लियर लग रहा था मुझे ये हो क्या रहा था भाई ऑस्ट्रेलिया में, कहीं नहीं आ रहा, लेकिन मनन ओपी हो जाए इन द चैट भाई लग रहा है yes it might be one of those years जहाँ पर we don't see Australia, but it's still early days. Pakistan is also there, but we'll discuss with other discounting them too early. You're discounting them too early. अभी भी I'm backing my predictions. Chirag knows it. Australia will be in the top 4. मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना यार, अगर लास्ट में स्नीक किल कर देती ना मुंबई इंडियंस टाइप, और फिर भाई नॉकआउट में आ जाते हैं वही वो मुंबई इंडियन टाइप का डर है ना, वो हो सकता है. बिल्कुल. लेकिन मनन यार great to want to face in knockouts. Exactly. We have to see off Manan. I know that Manan has to go. Manan, we'll continue the stream for a few more minutes. लेकिन see you very soon, and hopefully by the next time we discuss, हो सकता है कि 2-3 upsets हो जाए और भी better हो इंडिया के. I know. Selfish हो रहे हैं, greedy हो रहे हैं, but whatever, doesn't matter right now. Big up to you, 100%. चलो भाई, Manan OP in the chat everyone. Let's follow Manan CFC as well. Australia and Pakistan be 5th and 6th respectively बोल रहे हैं यहाँ पर कुणाल. वाओ, पाकिस्तान अभी आप बोल रहे हो काउंट आउट कर रहे हो अर्ली, मतलब लेट्स बी रियल, आई डोंट सी दैट पाकिस्तान को आप काउंट आउट कर सकते हैं. आई डोंट नो प्रसन्ना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट पाकिस्तान? मतलब अगेन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, इसलिए मैंने बोला इट्स अ वर्चुअल काइंड ऑफ round of 16 type of fixture for me. No, I think Pakistan England, they play the second last league game. That I think that will be a decider for 4th. Okay, so Pakistan, so I think England. Pakistan, England, Australia, these 3 will be in that 4th spot kind of pickle. India, New Zealand, England, I think will qualify, but this 4th spot, I think these 3 teams could be in a sort of a run rate or something there. And I think England might miss out on that. I'll be strong with my words. Yeah, Pakistan always turn up against England, so you never know. Yeah, ये वाला किसी को मालूम है? When was the last time when Australia didn't reach the knockout stages in ODI World Cup? I think it never happened in ODI World Cup. At least the second group, even I don't remember. Like South Africa, we remember a lot of times. As much as South Africa was one of the favored sides. Australia probably 83. Yeah. No, 83 we faced. Who did we face in the semis? England. Yeah, England. Yeah, it was 83. Prasanna, avid quizzer in the house, definitely is right, I think. Yeah, man, I think it's correct. Probably 83. Then West Indies faced Pakistan in the semi-final. Pakistan. Wow. That's crazy, man. Big up to Prasanna for saying that, and great question here, I must say. Pudin, yes, भाई सब लोग क्या बात है यार, इंडिया जीती है. Come on, let's go. We are live for 50 minutes. 50 likes तो बनता है, इतना तो कम से कम है. I think Baba is also live. Everyone is there. Baba, Mohak, everyone is enjoying there. कोई नहीं. I know Prasanna is also live. I know in what 5 minutes, right? Prasanna, you'll be covering the Chelsea women game as well. तो Prasanna, I know that we have discussed this match and upcoming match for India. लेकिन again schedule को देखे तो potential upset चिराग ने तो already बोल दिया. But New Zealand versus Afghanistan is next.
ठीक है, और अफगानिस्तान अगेंस्ट इंग्लैंड, चिराग ऑनेस्टली बोलूं मैं नहीं देख रहा हूँ अपसेट, लेकिन न्यूजीलैंड अफगानिस्तान में मुझे लगता है, क्योंकि न्यूजीलैंड इज अ टीम, आप देखो तो यस बांग्लादेश के साथ आराम से जीत गई है, लेकिन बांग्लादेश के साथ ट्रेडिशनली दे हैव नॉट डन वेल, एंड आई थिंक अफगानिस्तान इज बांग्लादेश टू द पावर ऑफ 2, यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई मीन, ठीक है। तो वो जो चीज है ना प्रसन्न, डू यू सी दैट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट नाउ केन विलियमसन, आई डोंट थिंक विल बी देयर फॉर दैट मैच मिनिमम, राइट? प्लस Yeah. there's also a question mark in my personal opinion that I know Matt Henry is bowling well and all that, लेकिन साउथी versus Matt Henry, what will you do if you are New Zealand right now? क्योंकि जैसे हमने इंडिया के बारे में बोला, there might be some changes because of others require game practice etc. So are you seeing a I think they are potential? still good enough, though, to be fair. I mean, Williamson has came back after a long time, but still, New Zealand was had their original squad only. So that's the thing. New Zealand, Williamson just came in, so I don't think that will be a big problem for them. It's not that Williamson has been played for so long and he just got injured. और ऑलमोस्ट इज विशफुल थिंकिंग फ्रॉम मी, क्योंकि न्यूजीलैंड इज अ टीम, अगेन टॉकिंग अबाउट नॉकआउट्स, ऑस्ट्रेलिया तो हम बोल ही रहे, बट मोर रिसेंटली इज न्यूजीलैंड फॉर इंडिया द नेमेसिस। तो पुणे एज अ पॉइंट यहाँ पर, तो मे बी वही है, सबकॉन्शियसली मुझे बोलने पड़ रहा है यार, न्यूजीलैंड अपसेट करे तो अच्छा है, आई डोंट नो, दैट माइट बी वन ऑफ द थिंग्स, बट प्रसन्न, व्हाट इज योर पोटेंशियल अपसेट, व्हाट डिड यू कॉल पोटेंशियल अपसेट, साउथ अफ्रीका नेदरलैंड्स chokers? Yes, potentially yes, I think, just because of what happened last year, because South Africa were actually looking good, so you never know what could happen there. But if Sri Lanka somehow managed to beat Australia on Monday, then even Australia have a problem. Wow. Because I think both teams have two out of 2 losses, so that's the thing with them. Both Australia and Sri Lanka have 2 losses, so you never know. भाई टू बी ऑनेस्ट ना, वर्ल्ड कप में एज मच एज हम कवर तो करेंगे, यहाँ चिराग भी करेगा along with श्रेयांश एज वेल एज प्रसन्न एज मच एज पॉसिबल, लेकिन मुझे पता है दैट वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू, अभी यार दिख रहा है मुझे तो प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान इज द नेक्स्ट गेम, मुझे लगता है वेयर इट विल बी लाइक दैट क्लोज गेम ना। चिराग, कौन सा क्लोज गेम दिख रहा है इसमें? If you talk about this heat now, first of all, definitely Australia versus Sri Lanka is on the cards of being one of the closest games. And also do not forget Lucknow to pitch, check the okay. venue. Yeah, that was my point. कि आप लखनऊ pitch मत भूलो. That is the more crucial part here. But did Lucknow do enough this first round of second round of matches में? I don't think कि आप second round में अभी judge करो. Let the wicket get older. And definitely Australia versus Pakistan could be the key one. Because दोनों की जो weaknesses है ना, वो एक दूसरे के opposite आएंगे, and दोनों की strengths एक दूसरे के opposite आएंगी. That will be the best part of that contest. That will make it a more realistic contest or a more nail-biting contest. Okay, ठीक है. South Africa looks balanced and players are in form. No, I have to start my stream, so ओके भाई प्रसन्ना ओपी हो जाए, हम लोग भी 2 मिनट और लेंगे बस, लेकिन प्रसन्ना ओपी हो जाए सब लोग, एंड डू चेक आउट पीबी टॉक्स एज वेल भाई, सबके चैनल्स लिंक्ड इन डिस्क्रिप्शन फर्स्ट लाइन, डेफिनेटली डू दैट गाइस, लेकिन बिग अप टू प्रसन्ना, सी यू सून, अभी अब द चॉइस, लेकिन डेफिनेटली इंडिया भाई चक दे भाई, लेकिन साउथ अफ्रीका का बैलेंस के हिसाब से यस यू कैन आर्ग्यू दैट, लेकिन साउथ अफ्रीका के बारे में अगर बोले ना चिराग, आई थिंक अभी भी मुझे लगता है as much as हम बोल सकते हैं that मतलब मार्करम कैन रोल इज आर्म ओवर, जो चीज इंडिया ने कहीं ना कहीं वो देखा फॉर फ्यू ओवर्स, साउथ अफ्रीका के पास दे आर ऑलमोस्ट बॉलिंग विद ओनली 5 bowlers every match. They are, but they do have the options. They have Markram with them. They have Markram, लेकिन you see him bowling more than a couple of overs at best. I'll just एक सेकंड की मैं निकालता हूँ ना, साउथ अफ्रीका स्क्वाड देख लेते हैं जल्दी से, तो आई थिंक साउथ अफ्रीका में आई थिंक अभी भी यार हैव दे बीन टेस्टेड विद दैट 5th बॉलर वाला चीज, वो मेरा क्वेश्चन है बेसिकली। अगर आप लोग देखते हो यहाँ पर देखो, अमंग द टॉप 5 ओनली मार्करम कैन रोल इज आर्म ओवर, ठीक है, देन यू हैव यहाँ पर दे प्ले इन द 11 केशव महाराज, रबाडा ऑफ कोर्स, एंगीडी एंड शामसी एंड ज्ञानसन तो ही खैर ठीक है, तो 5 ये है, तो आई डोंट थिंक दे हैव, सो ईदर दे हैव टू बेसिकली अगेन यू कैन आर्ग्यू दैट फेलुक वायो को आप खिला सकते हो, लेकिन किसको ड्रॉप करोगे, सो आई थिंक एग्जैक्टली राइट, दिस इज द बेस्ट 11 दैट इज प्लेइंग फॉर साउथ अफ्रीका, चेंज नहीं करेंगे, हां या they might, but we are पता है 6th bowler वाली situation with South Africa will come at a very in a one off match. I don't think South Africa will struggle that much without the 10th bowler.
ओके, यू डोंट थिंक सो? मतलब अगेन मैं देखना चाहता हूँ व्हेन दे आर टेस्टेड। एक होता है ना कि यार नहीं, उनको थोड़ा एक दिन वन ऑफ डे हो विद द बॉल, क्योंकि श्रीलंका ऑलमोस्ट डिड इट, करेक्ट, दे ऑलमोस्ट डिड इट। वो अलग बात है कि साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट करके कितना की थी, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कुछ if Australia loses against Sri Lanka, then they should come directly in 2027 World Cup. We'll be there यार, no matter what we'll be there. But मैं वापस से बोलता हूँ, जो ट्रांस ट्रांस टैस्मेनियन है बोलते हैं क्या, जो ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड टीम्स है ना कहीं मतलब, चिराग लेट्स बी रियल, कौन सी टीम्स अभी आप नहीं फेस करना चाहोगे सेमीफाइनल्स में? इंग्लैंड भी यू कैन से ऑन द डे। न्यूजीलैंड for India, I'll go with South Africa as well because we have to play a semi-final in Bombay. बॉम्बे में साउथ अफ्रीका नहीं खेलूंगा, मैं जिंदगी में नहीं खेलूंगा। But are we jumping the gun or are even discussing that question? क्योंकि I know it's just 3 games to the tournament, लेकिन इंडिया हाँ, जा रही है ना सेमीफाइनल्स, वो तो पक्की है ऑलमोस्ट। आई I'll डोंट। tell you why. I'll tell you why कि मैं इंडिया के लिए इतना कॉन्फिडेंट हूँ rather than any other team because इंडिया ने पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया खेल ली है। जो 6 टीमें हम डिस्कस कर रहे हैं हु विल मेक इट टू द टॉप 4, उनमें से 2 टीम्स हम खेल चुके हैं, तो 5 आउट ऑफ 2 बॉक्सेस आर टिक्ड। You just have to go against 3 other teams and आप you will be hoping कि आपके साथ तो नहीं हो रहा कोई सरप्राइज, आप मीनोज को तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हराओगे ही हराओगे। और द बेस्ट पार्ट इज अगर नेट रन रेट पर भी हुआ, द लास्ट गेम इज नेदरलैंड्स के साथ, आई थिंक दैट हेल्प्स। या लॉट डेफिनेटली। लेकिन इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, चोकर वर्सेस चोकर। Come on. मैं इस बार मुझे लग रहा है मतलब यस, न्यूजीलैंड राइट ऑफ देम। मैं तो चाहता हूँ ऑलमोस्ट दे डोंट रीच देयर, बट दे आर लुकिंग ग्रेट। मेरा टॉप 4 प्रेडिक्शंस अभी भी मैं बोलता हूँ, आई ट्राई एंड स्टिक टू इट। अभी कोई 3 गेम्स है, मुझे लगता है दैट ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान ऑल्दो भिड़ने वाली है नेक्स्ट फ्यू डेज में, और उस मैच के बाद काफी लोगों को लगा वन टीम इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट, लेकिन टेक्निकली अगर देखो तो आई थिंक टीम्स कैन अफोर्ड टू लूज 2 मैचेस, सिंपली पुट, राइट? तो वो हो सकता है। और बैक अगेंस्ट द वॉल वाला चीज आप देखते हो तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों ही टीम ऐसे वेयर आप व्हेन यू डोंट एक्सपेक्ट दे लाइक दे टर्न अप। सो आई एम स्टिल सेइंग दैट यू नेवर नो, बट द गुड पार्ट इज इंडिया स्टेज द नंबर 1 रैंक टीम एंड मोर ओवर हमने 8-0 कर दिया है। और कमिग्रेशंस टू पाकिस्तान, मतलब क्या ही तो बोल सकता है, लेकिन भाई अगेन पाकिस्तान फैंस, मैं तो इतना ही बोल सकता हूं, घबराना नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या है चिराग? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चलो भाई, जोक्स असाइड, बट गुड फन चिराग यार, टू हैव यू एज वेल एज रेस्ट ऑफ द पैनल। भाई जो भी लोग यहाँ पर है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, टू मिड विकेट, टू फुटबॉल मेडिको, टू पीवी टॉक्स, टू आई थिंक और कौन से चैनल आए थे मैं भूल गया, आप देख सकते हो, आप सबका है लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, पहला लाइन। बट जो भी लोग लाइक नहीं किए स्ट्रीम को, भाई व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अ लॉट ऑफ डेली कंटेंट कमिंग ऑन बोथ आवर चैनल्स, आप चेक कर सकते हो फॉर श्योर। एंड कल, हाँ, फॉर पीपल वेटिंग फॉर फुटबॉल कंटेंट, भाई कल आई एम वेटिंग भाई अपने हुएमाई के लिए। चिराग तो भाई खेल के चले गए, बाकी लोग जो भी लोग इंटरेस्टेड है प्लीज मुझे डीएम करिए। एक आई हैव गॉट वन कंटेस्टेंट, आई एम वेटिंग फॉर दैट एपिसोड टू बी टेलीकास्ट कल लाइव ऑन ऑलमाइटी ब्लूज, अगर हमें मिले एक और कंटेस्टेंट, ठीक है? और अदरवाइज आल्सो विल बी बैक ऑन ऑलमाइटी ब्लूज। और अभी के लिए ऑलमाइटी ब्लूज तो भाई अपना इंडिया है फॉर श्योर, लेकिन कोई नहीं, कुणाल, सब लोग को भाई बिग शाउट आउट फॉर श्योर। Oh wow, biggest fear, Superman, Kryptonite, Vampire, Sunlight, India, न्यूजीलैंड, भाई साहब चिन्मय, बिग अप यार। लेकिन भाई क्या बात है, 50 लाइक्स नहीं, सीरियसली आई फील whichever team will have the best spin attack will go for top 4। इंटरेस्टिंग, हाँ, क्योंकि we are getting to that पोर्शन जो लखनऊ की बात हो रही थी फॉर इंस्टेंस, एंड टू सम एक्सटेंट चेन्नई भी। बट देखते क्या होता है। ग्रेट कमेंट्स इन द चैट आज, अगेन बिग अप टू यू ऑल, और नो मैटर व्हाट वी आर अ फैन चैनल फॉर आउट सी। लेकिन अभी के लिए भाई चिराग आ रहा है भाई, आ रहा है, कब आ रहा है, लेकिन धैर्य, डेफिनेटली धैर्य, बिल्कुल। चलो गाइस, सी यू। सी यू गाइस।